कृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Page 25. परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल। परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल। परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल। परम दयाल
दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम कृपाल महा परम कृपाल श्री मां शारदा परम कृपाल परम कृपाल महा परम कृपाल श्री मां शारदा परम कृपाल करुणा सागर युगावतार नैया हमारी करो भव पार करुणा सागर युगावतार नैया हमारी करो भव पार परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल परम दयाल प्रभु परम दयाल राम कृष्ण प्रभु परम दयाल ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री अम्बे अम्बे मात की जय Om Namo Narayanaya, dear sisters, brothers, and loving children. We welcome you to this morning's satsang. This morning, we are happy to have Mrs. Mahendri Pillai to render devotional songs. It is always a great joy to listen to Mrs. Pillai. The first song is on page 109. Page 109. जय 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 करुमारी जय 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 कौमारी जय 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 करुमारी जय 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 कौमारी जय 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 करुमारी जय 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 कौमारी जय 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 करुमारी जय 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 कौमारी जय 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 कृष्ण मारी जय 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 कृष्ण मारी जय 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 सुकुमारी जय 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 सुकुमारी திருக்கடையூரில் அபிராமி சிதம்பரம் தன்னில் சிவகாமி திருக்கடையூரில் அபிராமி சிதம்பரம் தன்னில் சிவகாமி திருவேற்காசில் கருமாரி திருவேற்காசில் கருமாரி ஜகமெல்லாம் புகழும் உபகாரி ஜகமெல்லாம் புகழும் உபகாரி ஜய 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 கருமாரி ஜய 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 கௌமாரி ஜய ஜய ஜய
पराशक्ति अवतार शारदा माँ। जय 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 करुमारी। जय 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 कौमारी। जय 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 करुमारी। जय 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 कौमारी। जय 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 कृष्णा मारी। जय 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 कृष्णा मारी। जय 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 सुकुमारी। जय 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 सुकुमारी। திருக்கடையூரில் அபிராமி. சிதம்பரம் தன்னில் சிவகாமி. திருக்கடையூரில் அபிராமி. சிதம்பரம் தன்னில் சிவகாமி. திருவேற்காசில் கருமாரி. திருவேற்காசில் கருமாரி. ஜகமெல்லாம் புகழும் உபகாரி. ஜகமெல்லாம் புகழும் உபகாரி. ஜெயராம்பதி शारदा माँ। परशक्ति अवतार शारदा माँ। जयराम्बती शारदा माँ। परशक्ति अवतार शारदा माँ। जय 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 करुमारी। जय 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 कौमारी। Next song is on page 112, the first song. ஓம் வெள்ளை தாமரை பூவினிலே வெள்ளை கலையுடன் நிற்பவளே. வீணை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு காட்சியளித்திடும் தமிழ் தாயே. வெள்ளை தாமரை பூவினிலே வெள்ளை கலியுடன் நிற்பவளே. வீணை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு காட்சியளித்திடும் தமிழ் தாயே. புலவர் எல்லாம் புகழ் கலை மாதா. கலைகள் எல்லாம் அள்ளி தருபவளே. புலவர் எல்லாம் புகழ் கலை மாதா. கலைகள் எல்லாம் அள்ளி தருபவளே. கல்வியும் செல்வமும் பலத்துடனே வீரமும் வெற்றியும் தருவாயம்மா. புலவர் எல்லாம் புகழ் கலை மாதா. கலைகள் எல்லாம் அள்ளி தருபவளே.
கல்வியும் செல்வமும் பலத்துடனே வீரமும் வெற்றியும் தருவாயம்மா. வெள்ளை தாமரை பூவினிலே வெள்ளை கலியுடன் ஏற்பவனே வீணை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு காட்சியளித்திடும் தமிழ் தாயே. மலைமகள் கலைமகள் திருமகளே பூஜிக்கும் எங்களை காத்திடும் அம்மா. மலைமகள் கலைமகள் திருமகளே உன்னை பூஜிக்கும் எங்களை காத்திடும் அம்மா. உலக சங்கத்தின் தாயகமே எங்கள் மனதிலாடும் மணி விளக்கே. மலைமகள் கலைமகள் திருமகளே உன்னை பூஜிக்கும் எங்களை காத்திடும் அம்மா. உலக சங்கத்தின் தாயகமே எங்கள் மனதிலாடும் மணி விளக்கே. வெள்ளை தாமரை பூவினிலே வெள்ளை கலியுடன் ஏற்பவனே வீணை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு காட்சியளித்திடும் தமிழ் சாயே. வெள்ளை தாமரை பூவினிலே வெள்ளை கலையுடன் நிற்பவளே வீணை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு காட்சியளித்திடும் தமிழ் தாயே. ஓம். Page 50. ஓம். ஓம். ஜெய சிவ ஓம்காரா ஜய ஜய பஜ சிவ ஓம்காரா. ஜய சிவ ஓம்காரா ஜய ஜய பஜ சிவ ஓம்காரா. ஓம் ஜய சிவ ஓம்காரா ஜய ஜய பஜ சிவ ஓம்காரா. ஜய சிவ ஓம்காரா ஜய ஜய பஜ சிவ ஓம்காரா. குரு ब्रह्मा राम कृष्ण हर हर
जय भजे शिव ओंकारा ओम गुरु ब्रह्मा राम कृष्ण हर 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 परमहंसा गुरु ब्रह्मा राम कृष्ण हर 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 परमहंसा काली दुर्गा महालक्ष्मी हर 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 पराशक्ति काली दुर्गा महालक्ष्मी हर 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 पराशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हर 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 महादेवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हर 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 महादेवा ठाकुर शारदा विवेकानंद हर 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 सर्वदेवा ठाकुर शारदा विवेकानंद हर 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 सर्वदेवा उमा माधवी चंडी ज्वाला देवी मोहि पर हो दयाला उमा माधवी चंडी ज्वाला देवी मोहि पर हो दयाला जय शिव ओंकार जय जय भजे शिव ओंकार ओम श्री राम कृष्ण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री अम्बे अम्बे मात की जय Om Namo Narayanaya. We thank Mrs. Pillai for rendering inspiring bhajans. This morning, Mr. Jatin Hari will read from the Vedanta Kesari. Om Namah Shriyati Rajaya Vivekananda Suraya Sachitsaka Swarupaya Swamine Tapaharine. Revered Pravajika Ishtaprana Mataji, respected elders, dear sisters, brothers, and loving children, Om Namo Narayanaya. This morning's reading is from the Vedanta Kesari, February 2023 issue. This article by Swami Veda Nishtananda emphasizes the importance and relevance of Swami Vivekananda's message of inner strength in facing today's complex challenges. The article is titled The Vedanta Vaccine. The world is struggling under the impact of the pandemic due to the COVID-19 for the last 3 years. The casualties have been very high in number. However, the scenario has indeed changed with the passing of time since the virus caught us unawares, and now we seem to be better equipped to face the onslaught of the virus with the various vaccines at hand. The effect of the virus has been multi-layered. Lives have been lost. The bereaved had irreparable losses of their loved ones. Interhuman relationships have faced various challenges, both due to the proximity of the family members
in the boundaries of their homes and for the remoteness enforced among people in the larger society. Education of children has suffered a tremendous setback, especially for those who do not have ready access to the technology that supports the online mode of education. And common to all, there is a fear in the minds of most of us. Will the pandemic really end soon? Or is there another variant to pop up in the near future? Science has come forward to help us combat the virus through the various vaccines. But will these vaccines actually remove our fear about the uncertainty of the unknown future? The concept of the vaccines in medical science, put in simple layman's way, is to induce an inbuilt immunity of the body against the invading microbes. This introduces us to the real strength that fights against the diseases. It is the inbuilt immunity in our body. Swami Vivekananda says in his lecture titled Work and Its Secret, delivered at Los Angeles, California on January 4th, 1900, "No disease can come to me until the body is ready. It does not depend alone on the germs, but upon a certain predisposition which is already in the body. We get only that for which we are fitted." End quote. So the watchword is the strength in us. As we would look for ways to invoke that inbuilt strength in us, let us remember a memoir by Ella Wheeler Wilcox, a well-known American author and poet of her times, who narrates about her meeting with Swamiji in New York in the early months of 1895. It was that terrible winter of financial disasters when banks failed and stocks went down like broken balloons, and businessmen walked through the dark valleys of despair, and the whole world seemed topsy-turvy. Sometimes, after sleepless nights of worry and anxiety, my husband would go with me to hear the Swami lecture. And then he would come out into the winter gloom and walk down the street smiling and say, "It is all right. There is nothing to worry over." And I would go back to my own duties and pleasures with the same uplifted sense of soul and enlarged vision. When any philosophy, any religion can do this for human beings in this age of stress and strain, and when added to that, it intensifies their faith in God and increases their sympathies for their kind and gives them a confident joy in the thought of other lives to come, it is good and great religion. End quote. What was that teaching of Swamiji that instilled such strength? In an interview given to the Westminster Gazette in London on 23rd October 1895, Swamiji says, "I teach only the self, hidden in the heart of every individual and common to all. A handful of strong men knowing that self and living in its light would revolutionize the world, even today, as has been the case by strong men before, each in his day." This message of strength is in the Upanishads that has found its reverberation in the words of Swamiji in the present times. Swamiji says, "I preach only the Upanishads. If you look, you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads, it is only that one idea, strength. The quintessence of the Vedas and Vedanta all lies in that one word." End quote. Swami Ranganathanandaji, the 13th president of the Ramakrishna order, discusses various aspects of the strength in us while discussing the 10th verse of the 8th chapter of the Gita in his book, Universal Message of the Bhagavad Gita. He says that 3 types of strength are available in human beings:
namely Bahu Balam, physical strength, Buddhi Balam, intellectual strength, and Atma Balam, spiritual strength. Atma Balam comes from realizing one's own spiritual nature, which is the source of infinite strength. It alone can make one withstand the pressures of human life, and those pressures are plenty in today's society, breaking our nervous system, our psychic system, resulting in high stress. Swamiji teaches us 4 practical ways to invoke the spiritual strength in us. We have to first know our true nature. He says, all fears will vanish when you begin to assert your own nature. The next step is to affirm that true nature of ours. He says, the less you think of yourself as an insignificant person, the less fear there will be for you. The third step is to struggle and not to lose heart. He says, we have a place for struggle in the Vedanta, but not for fear. The fourth step is to expand oneself. He says, when man can say, I am in everything, in everybody, I am in all lives, I am the universe, then alone comes the state of fearlessness. Swamiji says in his lecture at Kumbakonam on the mission of Vedanta, let every man and woman and child, without respect of caste or birth, weakness or strength, hear and learn that behind the strong and the weak, behind the high and the low, behind everyone, there is that infinite soul, assuring the infinite possibility and the infinite capacity of all to become great and good. Let us proclaim to every soul, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Arise, awake. Awake from this hypnotism of weakness. None is really weak. The soul is infinite, omnipotent, and omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you. Do not deny him. Too much inactivity, too much of weakness, too much of hypnotism has been and is upon our race. O modern Hindus, dehypnotize yourself. The way to do that is found in our own sacred books. Teach yourselves, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. If there's anything in the Gita that I like, it is these 2 verses coming out strong as the very gist, the very essence of Krishna's teaching. He who sees the Supreme Lord dwelling alike in all beings, the imperishable in things that perish, he sees indeed. For seeing the Lord as the same, everywhere present, he does not destroy the self by the self, and thus he goes to the highest goal. Thus there is great opening for the Vedanta to do beneficent work both here and elsewhere. This wonderful idea of the sameness and omnipresence of the Supreme Soul has to be preached for the elevation of the human race here and elsewhere. End quote. It is this treasure of Vedanta that the world is in dire need of now. Let us take the Vedanta vaccine that will strengthen the immunity in us to face the challenges of life and the fear of the uncertain future, whether it be about the pandemic or any other aspect of our lives. Hari Om Tat Sat. Om, page 83. Om Radhe Govind Gopala
जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला कृष्ण मधुसूदना मधुसूदना कृष्ण कृष्ण मधुसूदना मधुसूदना कृष्ण कृष्ण मधुसूदना मधुसूदना कृष्ण कृष्ण मधुसूदना मधुसूदना कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला कृष्ण मधुसूदना मधुसूदना कृष्ण कृष्ण मधुसूदना मधुसूदना कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे गोपाला राधे गोविंद गोपाला जय गोविंद राधे 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 गोपाला ओम श्री राम कृष्ण भगवान की
हनुमान की जय। श्री अम्बे अम्बे मात की जय। Om, page 23. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Kamar Pukur Gadadharana, Kamar Pukur Gadadharana, Kamar Pukur Gadadharana, Kamar Pukur Gadadharana. Pranam lo Shri Sharanam. Shri 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 Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Ram Krishna, Ram Krishna, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Sharada Mata, Sharada Mata, Pranam lo Shri Sharanam. Shri Sharada Mata, Sharada Mata, Pranam lo Shri Sharanam. Jai Ram Bhakti Sharda Ma, Jai Ram Bhakti Sharada Ma, Jai Ram Bhakti Sharda Ma. Jai Ram Bhakti Sharada Ma. Pranam lo Shri Sharanam. Shri 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 Sharda
शारदमाता शारदमाता प्रणाम लो श्री शरणं श्री शारदा माता शारदा प्रणाम लो श्री शरणं श्री शारदमाता शारदमाता प्रणाम लो श्री शरणं श्री शारदा माता शारदा माता प्रणाम लो श्री शरणं श्री 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 राम कृष्ण प्रणाम लो श्री शरणं श्री राम कृष्ण प्रणाम लो श्री रमाकुपूर गदाधरणा बोलो रमाकुपूर गदाधरणा प्रणाम लो श्री शरणं श्री प्रणाम लो श्री शरणं श्री राम कृष्ण प्रणाम लो श्री शरणं श्री राम कृष्ण प्रणाम लो श्री शरणं श्री प्रणाम लो श्री शरणं श्री प्रणाम लो श्री शरणं श्री शारदमाता प्रणाम लो श्री शरणं श्री शारदा माता प्रणाम लो श्री शरणं जय राम बाकी शारदा माँ जय राम बाकी प्रणाम लो श्री शरणं श्री प्रणाम लो श्री श्री शारदा माता प्रणाम लो श्री शरणं श्री शारदा माता प्रणाम लो श्री शरणं श्री 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 राम कृष्ण शारदा माता प्रणाम लो श्री शरणं राम कृष्ण शारदा माता प्रणाम लो श्री शरणं ॐ श्री राम कृष्ण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री अम्बे माता की जय. Let us meditate for a few moments. And as we meditate, we must always feel the presence of God in our hearts. There are infinite ways of experiencing or feeling
or knowing that God is definitely in each and every heart. As we sit quietly and contemplate, we feel that power within us, always there to guide and protect us. O Vivekananda, as the purest of the pure, and having received the kindness of Sri Ramakrishna, you are the greatest. Though you had taken up the life of sannyasin, you console and comfort those who are in the abyss of misery. O Vivekananda, eternally regarded as courageous and good, we sing your glory this auspicious morning. O destroyer of passion, remove the darkness of worldly desires from us. You who are pure and radiant always, protect us and show us the way out of our difficulties. O discriminating one, give us mental peace. O Vivekananda, eternally regarded as courageous and good, we sing your glory this auspicious morning. जय श्री गुरु महाराज की जय, महामाई की जय, स्वामी जी महाराज की जय, गंगा मात की जय, महावीर स्वामी जी की जय, सर्वऋषि मुनियों की जय,